Hello, friends. I welcome you all to my channel Learn English Today. In today's video, we are diving into some interesting and useful English phrases featuring the words tough and hard. These phrases will help you sound more natural and expressive in your conversation. So, without wasting time, let's get started. The first word is the first phrase is tough cookie. Tough cookie, meaning a person who is strong, determined, and not easily discouraged and intimidated. वो इंसान जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन को इफ़ेक्टिवली हैंडल कर लेता है और आसानी से हर्ट नहीं होता और हार नहीं मानता. He never gives up. That person is called tough cookie. Example sentences: she is a tough cookie and never gives up easily. Second sentence: don't worry about him. He's a tough cookie and can handle it. Next one: you have to be a tough cookie to survive in this industry. So, tough cookie, a strong person who can handle the difficult situations nicely. Next one is hard road to hoe. Hard road to hoe, meaning a difficult situation to deal with. मीन्स जब किसी सिचुएशन में बहुत सी प्रॉब्लम होती हैं और उनको डील करना पड़ता है तब यूज़ करते हैं हार्ड रो टू हो. मीन्स एक डिफ़िकल्ट टास्क या सिचुएशन जिसमें बहुत से एफ़र्ट्स चाहिए, बहुत हार्ड वर्क चाहिए और जिसको कंप्लीट करना इतना आसान नहीं होता. उसके लिए हार्ड वर्क, एफ़र्ट और पेशेंस चाहिए. हार्ड रो टू हो. Example sentences: raising a child with special needs is a hard road to hoe, but they are doing a great job. Recovering from the accident was a hard road to hoe, but he never gave up. Next sentence: after losing her job, finding a new one in this economy was a hard road to hoe. Hard road to hoe means a difficult task, not easy not to complete it. Next is tough call. Tough call means a difficult decision to make. जब कोई डिसीज़न लेना मुश्किल हो, स्पेशली जब दो ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना हो, तब यूज़ करते हैं टफ कॉल. जब डिफ़िकल्ट सिचुएशन डिसीज़न हो, डिफ़िकल्ट चॉइस हो, तब टफ कॉल का यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: इट वॉज अ टफ कॉल बट दे डिसाइडेड टू कैंसल द इवेंट ड्यू टू बैड वेदर. Next sentence: leaving his hometown for a new opportunity was a tough call, but he knew it was necessary. Third sentence: it was a tough call, but they decided to cancel the event due to bad weather. Means जब डिसीज़न लेना मुश्किल हो, चॉइस लेना करना मुश्किल हो, लेकिन फिर भी करना पड़े, तब बोलते हैं टफ कॉल. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Hard nut to crack. Hard nut to crack, meaning a problem that is very difficult to solve or a person who is very difficult to understand. मतलब जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल होता है और या किसी कॉम्प्लिकेटेड इंसान को समझना मुश्किल होता है, तब इस फ्रेज का यूज़ करते हैं हार्ड नट टू क्रैक. जब किसी प्रॉब्लम से डील करना मुश्किल है या किसी इंसान से डील करना इतना आसान नहीं है, तब जब कुछ सामने बहुत चैलेंजिंग होता है, उसकी कॉम्प्लेक्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, तब हम यूज़ करते हैं हार्ड नट टू क्रैक. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: द डिटेक्टिव फाउंड द केस टू बी हार्ड नट टू क्रैक ड्यू टू द लैक ऑफ एविडेंस. Next sentence: understanding the new software is a hard nut to crack for most of them.
Convincing him to change his mind was a hard nut to crack, मतलब उसको आसान नहीं था करना. तो it refers to a person or problem that is difficult to understand, solve, or to deal with. Hard nut to crack. Let's move to the next one. That is, when the going gets tough, the tough get going. The very interesting one. Meaning, when a situation is difficult or dangerous, strong people work harder to resolve the प्रॉब्लम. मतलब जब कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, तो स्ट्रॉन्ग और डिटरमिन लोग जो होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं एंड दे डोंट गिव अप. इंस्टेड दे वर्क हार्डर टू ओवरकम द चैलेंजेस. ये नहीं कि टफ सिचुएशन को देख के हार मान ली, गिव अप कर दिया, बल्कि वो पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं. उनको वो डिफ़िकल्टीज़ उनको और स्ट्रॉन्ग बना देती है उस उस डिफ़िकल्ट सिचुएशन को या उन चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए. एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं. The team was facing a lot of challenges, but when the going gets tough, the tough get going. Next one, she didn't let the difficult situation discourage her because when the going gets tough, the tough get going. Next one, in the face of adversity, they knew that when the going gets tough, the tough get going. तो स्ट्रॉन्ग लोग डिफ़िकल्ट सिचुएशन में और ज़्यादा एफ़र्ट करते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और उस सिचुएशन से डील करते हैं. नेक्स्ट इज़ टफ इट आउट. टफ इट आउट means to stay strong and determined in the difficult situation, means to endure a difficult situation without giving up, showing strength and determination until the problem is solved. मतलब जब स्ट्रॉन्ग लोगों के सामने कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आती है, कोई मुसीबत आती है, कुछ चैलेंजेस आते हैं, सो दे रिमेन स्ट्रॉन्ग and they don't lose their patience, they don't give up until the problem is solved. अपने determination से, अपनी strength से वो उस मुश्किल वक्त से बाहर निकल आते हैं. एग्जाम्पल सेंटेंसेस लेते हैं. We just need to tough it out until the help arrives. If we tough it out, things will get better soon. They had to tough it out through the harsh winter. So that's all for today. In this video, we have learned some beautiful, amazing phrases which will surely enhance your vocabulary. Tough cookie, hard road to hoe, tough call, hard nut to crack. When the going gets tough, the tough get going and tough it out. I'm sure that you have liked the video and you have found the video helpful. So if you found the video interesting and helpful, don't forget to like, comment and subscribe my channel Learn English Today. So for more languages and tips and lessons, stay tuned. If you have any question or suggestion for the future videos, leave them in the comments below. I will catch you in the next video. Until then, happy learning and thanks for watching.